হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো এখন কথা বলবো দেবের আপকামিং সিনেমা কাছের মানুষের ফার্স্ট সং নিয়ে, চুম্বক মন, যেটা কিন্তু গতকাল রিলিজ হয়ে গেছে। এবং সিলাম্বার হাসানের একটা নতুন ফিল্ম আসছে, সেটা ট্রেলারও গতকাল রিলিজ হয়ে গেছে। তো এই দুটো কন্টেন্ট নিয়ে আজকে কথা বলবো। তো চলো আগে দেখে নেওয়া যাক চুম্বক মন এবং পেন্টু থামিন্ডা টু কারু ট্রেলারটা কীরকম হলো, তারপরে কথা বলবো তোমাদের সাথে এই দুটো কন্টেন্ট নিয়ে। சில சமயம் உண்மையை சொல்றது கதை சொல்றதை விட கஷ்டம். இது ஒரு உண்மையான மனுஷனோட வாழ்க்கை, a life. உச்சிக்கு போக போக தனிமை, ஆள் இல்லாத மலை சிகரத்துல தன்னந்தனியா நின்று இருக்கிற மாதிரி. ஜெசிக்கு பரோட்டா கடை இதானே? ஆமா, ஆனா யாரா இருந்தாலும் காசு கொடுத்தாதான் தீனி. ஆனா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தீயில எரிஞ்சு எரிஞ்சு அங்க வந்து சேர வேண்டியிருக்கு. மனுஷனுங்களை அடிச்சுட்டு போற காத்து ஏதுன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியறதில்ல. எல்லாரும் பறந்துட்டு இருக்காங்க. and kill or die. அண்ணே, எல்லாரையும் கொன்னுருவேன். கொன்னிருக்கியா? என்னால் கொல்லவே முடியாது. எனக்கு அடுத்தது நீ தான் தலைவன்னு சொன்னா என்னை கொல்லுவியா? எல்லா தொழிலையும் அதுதான், kill or be killed. இட்ஸ் a mad dance. இங்க கிளம்புறதுக்கும் போய் சேர்றதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. அதுக்கு பேர் தான் விதியா. இங்கேருந்து போக முடியுமா? ஒவ்வொருத்தரும் தப்பியோட தான் முயற்சி பண்றாங்க. எப்படியாவது எங்கேயாவது போயிடணும்னு துடிக்கிறாங்க. ஆனா தப்ப முயற்சி பண்ணா இன்னும் ஆழமா மாட்டிக்கிறாங்க. சரியா சொல்ல போனா நீ அவருக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது, அவர் தான் உனக்கு பாதுகாப்பு. இதுல கதையே கிடையாது. என்ன அது வாழ்க்கை, அர்த்தம் இருக்குன்னா இருக்கு, இல்லைன்னா இல்லை. ஆனா இவனை பொறுத்த வரைக்கும் இது வெறும் விளையாட்டு, வேற ஒன்றும் இல்லை. இங்க இருந்து யாரும் போக முடியாதானே? இங்கே பாரு, நீ இங்கே எந்த பெரிய விஷயத்துல ஈடுபடலன்னு வையே, உனக்கு ஒன்றுமே தெரிலன்னு வையே, தப்பிச்சு போனால் ஒருவேளை விட்டுருவாங்க. திக்கத்தவங்க கூட தெய்வம் இருக்கும். தெய்வம் இல்லைன்னா பேய். எங்க முடியும் ஆற்றின் பயணம். இவனுக்கு முடிவெப்பு இல்லை, தொடரும். তো ফার্স্ট কথা বলবো সিলাম্বার হাসানের মুভিটা নিয়ে। তো এটার ট্রেলারটা কিন্তু জাস্ট এক ঘর লেগেছে, যদিও বা কোনো সাবটাইটেল ছিল না, কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, বাট স্টিল ট্রেলারটার প্রেজেন্টেশনটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তার হয়তো দুটো লাইফস্টাইল হতে চলেছে। তিনি ফার্স্টে খুব স্ট্রাগল করতো, খুব কষ্ট করতো, কোনো একটা গ্রামে হয়তো থাকতো, এবং সেখান থেকে তিনি হয়তো একটা ডন বা একটা ভাই টাইপের হয়তো উঠে আসবে, কোনো একটা সিস্টেমে অ্যাগেনস্টে হয়তো লড়ার জন্যে, বা নিজেকে হয়তো তিনি কোনো পরিবর্তন করে ফেলবে কোনো একটা মানে সিচুয়েশান আসার পর। তো তার এখানে দুটো ফেস, মানে এখানে কিন্তু দুটো আমরা লুকে দেখতে পাবো, সেটা কিন্তু দুর্দান্ত লাগছে দেখতে। এবং তাছাড়া পুরো ট্রেলারটায় যে লাইটিংটা যেভাবে ইউজ করা হয়েছে, একদম রেড লাইট দিয়েছে, বা যে ডিপ লাইটগুলো ইউজ করা হয়েছে, কালার গ্রেডিংটা কিন্তু দারুণ লেগেছে আমার। এবং অ্যাকশান তো থাকতেই চলেছে, তার সাথে ট্রেলারটার মধ্যে বিজিএমটা কিন্তু চূড়ান্তভাবে করা হয়েছে, আমি পুরোপুরি কিন্তু এনজয় করছিলাম। এবং এখানে সিলাম্বার হাসানের অভিনয়টা কিন্তু আমার মনে হয় আবার মুগ্ধ করতে চলেছে দর্শকদের। তো দেখা যাক এবার ট্রেলারটা, তো দেখা যাক ফিল্মটা কীরকম হয়। সাবটাইটেল ছিল না, সেজন্য সেরকম কিছু বুঝতে পারিনি অ্যাকচুয়ালি গল্পটা কী হতে চলেছে। তাও আমি আমার নিজের প্রেডিক্টটা করলাম, যেটা দেখে মনে হলো। তো একটা কিন্তু বেশ ক্রাইম থ্রিলার জনার কিন্তু হতে চলেছে, যেটা আমার মনে হলো ট্রেলারটা দেখে। নেক্সট কথা বলবো চুম্বক মন গানটা নিয়ে। তো উষা উত্তুপের গলায় আবার একটা বাংলা গান, এবং গানটা পুরো কিন্তু একটা জ্যাজ টাইপের করা হয়েছে। এবং ভিডিওটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যেখানে ঈশা সাহা এবং দেব যখন প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে, যখন প্রথম আলাপচারিতা, প্রথম মানে প্রেমটা যখন শুরু হচ্ছে, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি গানটার মধ্যে। লিরিক্সটা কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে, এবং এই যে দুজনের একসাথে হাঁটা চলা বা একসাথে সময় কাটানো, দুজনে খুনসুটি করা, এবং মানে এই যে মিষ্টি প্রেমটা যেভাবে স্ক্রিনে তুলে ধরা হয়েছে, বেশ কিন্তু মিষ্টি লাগছে। তাদের কেমিস্ট্রিটা কিন্তু সত্যিই বেশ ভালো লাগছিলো দেখতে, এবং মিউজিকটাও কিন্তু বেশ একটা অন্যরকম ধাঁচাই করছে। মানে আমরা বাংলা গান যেরকম রোম্যান্টিক গান শুনে থাকি, সেখান থেকে এটা ট্রিটমেন্টটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা, এবং আমার মনে হয় উষা উত্তুপের ভয়েসে গানটা কিন্তু বেশ মানানসই হয়েছে। তো তোমরা জানিও তোমাদের এই দুটো কন্টেন্ট কীরকম লাগলো, এবং যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে, নোটিফিকেশন বেলটাও কিন্তু অন করে দিও। তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে, বাই।